गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में श्री गणेशा होता है, एसआईपी में श्री गणेशा होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने अल्फ़ा म्यूचुअल वेल्थ की तरफ से एपिसोड 5 लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट मित्र नॉलेज सीरीज़ में। एपिसोड 5 आज का जो टॉपिक है वो कोई भी चीज़ का, जैसे मैंने बताया कि श्री गणेशा होना चाहिए, तो एसआईपी का भी, कोई भी नई एसआईपी आप जब शुरू करते हैं तो उसका श्री गणेशा बहुत नॉलेज के साथ होना चाहिए। और ये नॉलेज सीरीज़ का हमारा मोटिव यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह हो, आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका जो मेहनत का पैसा आपने जो लगाया है उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। तो इसी तर्ज पे आज मैं आपके सामने एपिसोड 5 लेके आ रहा हूँ, जिसका टॉपिक है 7351 स्ट्रैटेजी। ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, या रूल बोल सकते हैं आप इसको। ये अगर ये रूल फॉलो किया जाता है तो आप जो एसआईपी निकालते हैं उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्या है स्ट्रैटेजी? Normally what happen when you start investing in SIP, it seems to be very simple because there are lot many direct apps are available. You can directly go to your bank website and you can start any SIP. But at the same time you can also take help from the advisor, but at the same time it is very complicated. So to address this, 7531 strategy is absolutely of great help. How the strategy will help you? It is a very simple strategy, and for the long term, the strategy will be like a golden rule. If you follow this golden rule, you are going to have very good returns in the future. So, what is this 7351 strategy all about? So let's talk about 7 first. So what 7 is all about? Any guesses? Let's see. So 7 is all about time horizon. So ideally when you start any SIP, you should at least have a 7 plus years investment time horizon. उतना होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो it is a medium term, or it either medium term or either short term. But for the long term investment, you should have this 7 plus year investment time horizon. So why you should have 7 plus years of time horizon, investment time horizon? It helps to increase the odds of reasonable returns and reduce the odds of negative returns. क्या होता है, जब आप ज़्यादा समय मार्केट में रहते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टर्म के लिए हो तो हो सकता है कि रिटर्न्स आपको उतने अच्छे ना मिले। हाँ, हो ये भी हो सकता है कि आपको उतने टाइम तक रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन आप अगर वो मार्केट से निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली ज़ीरो इन दैट केस। सो इसमें इसीलिए ज़्यादा टाइम तक रहना बहुत ज़रूरी। सो हैविंग अ 7 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन इज़ गुड। ऑन एन एवरेज ये देखा गया है कि आप जो ज़्यादा देर तक रहे हैं मार्केट में, सो मोर देन ओवर द ईयर्स मोर देन 10% रिटर्न्स दे हैव accumulated so far. So 7 is all about, like I said, time horizon. Here is the data which is shared by uh, Funds India Research. So this is Nifty 50 Try SIP rolling returns, as you can see. So this is average moderate returns, where in 1 year 18% returns expected from any good equity fund. 3 years 16%, 5 years 16, and 7 years 15% moderate returns. These percentages represent CAGR, that is compounded annual growth return. So max
that is best case scenario. There are many plans where you can see more than 141% of returns, 54% of returns over 3 years, 5% sorry 48% over 5 years, and 40% over 7 years. And there is a worst case scenario where your returns will you may find in some of the plans returns are in negative also. So there are moderate case, best case, and worst case. Excuse me. So you can see in this chart where this 7 years here, the 7 years, you can see month wise, year wise, sorry, I mean, like January 2000, then 2001, 2002, now January 2023. So you can see here the over and above all these returns expect except few like 7%, 9%, 9%. Everywhere you'll find more than 10%. This is proven, this is evidence based. So returns more than 10%. So you can see all over the green where returns are more than or equal to 10%. And very few schemes you'll find the negative returns, like in 2020 there was a bubble of uh, that dot-com bubble, and then here in January 2008 there is the recession bubble, the Bank of America and entire stock market collapsed during this period. Then again 11 minus 25%. So over and above, there are some uh, uh, negative returns due to some global clues. But yes, over and above, it's all green. So in the last 23 years, irrespective of when you started your equity, in SIP, you always got an opportunity to exit with a minimum of 11%. तो बहुत लोग एटलीस्ट 11% रिटर्न्स लेके निकले हैं, लेकिन उन्होंने टाइम फ्रेम जो रखी है वो 7 to 10 years की ही रखी है. So in order to make the most of your equity SIP investments, mentally prepared to stay invested at least for 7 years. क्या होता है, हम लोग नॉर्मली एक टेंडेंसी बनी हुई है कि मैंने SIP शुरू कर दी तो मुझे रिटर्न्स मिलना 1 साल में चालू कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लोग रखना चालू करते हैं, जो कि गलत है. ऐसा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रखना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए. पैसा ग्रो होने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम देना ही पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसे ले लिया तो डबल वाला तो कोई स्कीम नहीं है. यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली. इन केस ऑफ SIP है ना, तो आपको ये तो पता ही है कि बेसिक्स ऑफ SIP की आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में आती है, ये सारे बेनिफिट्स उसके साथ में आते ही हैं. बट यू शुड, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी SIP, यू शुड मेंटली प्रिपेयर दैट यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 7 years and above. Now 5. What is 5? Diversify your equity portfolio using 5 finger strategy. अभी अपने पांचों उंगलियां अलग अलग है, अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग उसका यूज़ है, अलग अलग तरीके से है. So diversifying your portfolio using 5 finger strategy, this distinct portfolio construction strategy places equal emphasis on 5 key schemes: value, quality, global exposure, mid small cap, growth at a reasonable price. ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो ये स्ट्रैटेजी जब यूज़ करते हैं, ये रूल अब जब यूज़ करते हैं, तो यूजिंग दिस 5 finger strategy इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. सो इफ़ यू लुक एट whenever this strategy is used in the past 10 years, a monthly SIP in the 5 finger portfolio gave an annualized return of 19% and outperformed Nifty 50 try by 3%. तो बेंचमार्क से 3% के रिटर्न ज़्यादा भी दिए हैं,
एंड ऑन एन एवरेज एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 19%। तो ये बेनिफिट होता है यूजिंग 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, जो कि डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है। अभी इसमें जैसे वैल्यू मैंने बताया कि कोई फंड ऐसा होता है कि जैसे अभी टाटा डिजिटल, व्हेन टाटा डिजिटल स्टार्टेड, सो इट हैज़, ऑल्दो इट इज़ अ थीमेटिक फंड, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया एसआईपी के माध्यम से, तो उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। उस क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर भी वो रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स दैट पर्टिकुलर फंड होल्डिंग इज आर वेरी गुड, then there are mid cap and small cap investment is there, and growth at a reasonable price. So you have to look at these 5 points whenever you are starting an SIP. You can see over here, like this is for 1 year, 5 finger framework में 44% रिटर्न है, वेयर एज निफ्टी 53 ट्राई में 32% एंड निफ्टी 500 ट्राई में 43%. So this is how, so out performance over nifty 50 is 12%, 1%. So this is how you should analyze that, how helpful this strategy. Now this is very important, very critical to understand, very important to understand. What is 3? Any guesses? Any guesses? This is in red, so something needs to be care taken care of in a great way. So what it should be? 3 is all about prepare mentally for 3 common phases where the most investors give up on their equity SIP. मतलब क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर है जब वो SIP शुरू करते हैं 7 साल 10 साल के लिए, तो उनके ये SIP लाइफ स्पैन में 3 फेजेस आते हैं, मोस्ट कॉमन फेजेस होते हैं वो, जिसमें वो ना चाहते हुए भी SIP एक तो स्टॉप करते हैं, रिडीम करते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं. So while equity markets have historically provided superior returns over longer time frames, the real challenges is to survive the 3 temporary, I said, I'm stressing upon temporary, not permanent, temporary but inevitable phases of pain that happen during the initial years. Initially, 5 years में होता ही है, highly likelihood in the first 5 years of your equity investing journey. क्या होता है वो? So first is disappointment phase, the phase where the returns are subpar 7 to 10%. नॉर्मली क्या होता है, जब कोई SIP शुरू करते हैं, डायरेक्ट हो या एडवाइज़र के थ्रू हो, तो हम लोग कंपेयर करना चालू करते हैं, यार वो फंड में तो मेरे को 20% मिल रहा है, इसमें तो 10% मिल रहा, कर दो बंद यार, वो टाटा डिजिटल तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये तो स्मॉल कैप, ये तो मिड कैप है, मल्टी कैप है, कर दो बंद. तो ये कंपैरिजन जब किया जाता है, उस समय हम लोग एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि यार मैं, यू गेट डिसअपॉइंटेड बाय द रिटर्न्स, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग नाराज़ होके वो छोड़ देते हैं. सो दैट वन फेज इज द इरिटेशन फेज, द फेज वेयर द रिटर्न्स आर मच लोअर दैन योर एक्सपेक्टेशंस. बहुत बार क्या होता है कि पीक पे हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और रिटर्न उसका जो NAV है वो गिरता जाता है, तो एक्सपेक्टेशन से कम रिटर्न्स आते हैं, लाइक 0 to 7% नॉर्मली. तो उस समय भी हम लोग निकाल लेते हैं. पैनिक फेज, अभी जैसे रिसेंटली कुछ मार्केट में हुआ था, लास्ट मंथ की बात है, छोटा सा ही था लेकिन बहुत लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दिया था. बीच में ऐसे कुछ ये होते हैं, ग्लोबल इश्यूज होते हैं, जिसके कारण भी लोग पैनिक होके निकाल देना चालू करते हैं. सो दैट इज, सो दीज 3 phases यू हैव टू टेकन केयर ऑफ: डिसअपॉइंटमेंट फेज, द इरिटेशन फेज, द पैनिक फेज. ठीक है, एनालिसिस होना चाहिए, उसके लिए एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, और ये एनालिसिस आपसे अच्छे एडवाइज़र करते हैं क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं, वो समझ सकते हैं. मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन रशिया का, तो उस समय टाटा डिजिटल फंड जो था वो काफ़ी डाउन जा रहा था, काफ़ी उसके रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे थे.
तो उस समय ये रेड फ्लैग एडवाइज़र ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो मैंने वो आइडेंटिफाई किए और मैंने मैंने इन्वेस्टर्स को मैंने इमीडिएटली इसके बारे में बताया कि दीज आर द रेड फ्लैग्स, इफ़ यू वांट टू स्विच इन समवेयर एल्स यू कैन। उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने स्मॉल कैप में, फिर डिजिटल से स्मॉल कैप में मूव हो गए, जिसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए डिजिटल। इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल ख़राब है। डिजिटल के भी जो रिटर्न्स थे, जो रहना चाहते थे, जिन्होंने जो इंस्टेड ऑफ पैनिक सेलिंग यू कैन स्विच योर पोर्टफोलियो एनीवेयर बट डोंट सेल। तो वो भी चीज़ होती है काफ़ी सारे। किसी की एस चल रही थी तो वो एस मैंने दूसरी जगह स्विच करवाई। तो ऐसे कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं, बट यू नो दीज आर द फेजेस वेयर नॉर्मली यू withdrawn from the market. Ideally you should not, because these are temporary phases. अभी आप देखेंगे यहाँ पे, जब डॉट कॉम बबल आया था तब यहाँ पे काफ़ी सारा लो रिटर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं, तो दीज आर पैनिक जोन एक्चुअली, दिस रिप्रेजेंट पैनिक जोन। वैसे ही 7-8 में ये पैनिक जोन आपको दिख रहा है, 10-11 में ये पैनिक जोन रिसेशन के समय, अभी 14-15 में ये आपको थोड़ा सा पैनिक जोन दिख रहा है, 19 में ये पैनिक जोन है, यहाँ पे 21 में ये छोटा सा पैनिक जोन है, यहाँ पे इरिटेशन जोन है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिटर्न्स कम आए हैं ओवर द ईयर, बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर यू विल फाइंड more returns more than 10%. Then most important is one. What is one? Increase your SIP amount after every 1 year. This is very 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 important. क्योंकि देखा गया है कि आप जब स्टेपअप करते हो, आप आपका SIP की वैल्यू इंक्रीज करते हैं आइदर थ्रू स्टेपअप और थ्रू एडवाइज़र और जो भी है, सो even small increase in your equity SIP amount every year can make a huge difference to your final portfolio value over the longer run. So how over the 20 years the value of a portfolio where the SIP amount is increased 10% every year is almost twice that of a portfolio where the same amount is invested every year. So आप अगर कंपेयर करेंगे जिसमें आपने फिक्स SIP रखी है 5000 की, और जिस एक SIP है दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे साइड में एक SIP है जो 5000 की शुरू की है, लेकिन एवरी ईयर दैट SIP इज इंक्रीज्ड बाय 10% और 5%, तो नेचुरली जो जिसमें आप इंक्रीज कर रहे हैं आपकी SIP अमाउंट एवरी ईयर, जिसको हम लोग स्टेप अप बोलते हैं, तो उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ही आएंगे कभी भी. So you can see here in this table portfolio value with increased SIP every year at 12% CAGR return expectation. So monthly SIP जैसे मैंने बताया कि no annual increase, तो 5 साल में 4 lakhs, 12 years 12 lakhs, 25 lakhs in 15 years. अभी इसमें देखिए 5% इंक्रीज किया है एवरी ईयर, सो 4 लाख फर्स्ट 5 years. यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज नहीं था, बट यहाँ पे 14 lakhs हो गया. यहाँ पे अभी आप लॉन्ग टर्म आप देखिए कि कैसा इफेक्ट होता है. यहाँ पे 25 lakhs है, यहाँ पे 32 lakhs है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ पे 49 lakhs है, देयर इज़ 68 lakhs, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ओवर द ईयर्स. सो यू कैन सी यहाँ पे भी अगर 10% कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 शुरू में देखते हैं 4 लाख का है, तो यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे 12 लाख का है 10 years के लिए, तो यहाँ पे 17 lakhs का डिफरेंस है. सो दिस इज हाउ you should be focusing on these particular strategies 7351. So summing it up now, how to become a successful equity SIP investor. The 7531 rule strategy is very important. So what is 7? 7 plus year of time horizon, time frame. What is 5? 5-finger strategy for building equity SIP portfolio, diversified SIP portfolio. What is 3?
Don't stop your equity SIP in the three tough phases. What are three tough phases? Disappointment phase, where the returns are, uh, you know, are less than 7 to 10%. Irritation phase, where the returns are between 0 to 7%, and panic phase, where the returns are in negative. So where most SIP investors give up. So three, then increase your SIP amount every 1 year. So this 7-5-3-1 strategy will make you SIP wealth creation journey very smooth, and you will have your long-term returns over the year. So this is it for today. So in Alpha Mutual Wealth, we prepare objective planning absolutely for free. So you can just scan this code over here, and you can fill up the Google form attached to this scan code. We will get all the details, and we will plan your objectives accordingly. And for existing investors, this service request QR code is here, available here. You can scan the code over here, and you can raise any service request from here. So thank you. See you in the next episode, that is episode number 5, with some more interesting topic. Thank you so much.